Uh, Welcome everyone. Today we have Dr. Rath with us. As all of you know, Dr. Rath has done a session with us in June also when we had this June Awareness Month, Scleroderma Awareness Month. Sir is consultant rheumatologist and director with Max Hospital, Delhi. And Sir has been guiding Scleroderma India also and helping us throughout this journey. And the whole idea of doing this session was because Sir knows that all of us face a lot of ulcers and Raynaud's during this session, during this period. So Sir only suggested that we will be doing this session when the winter will start. So Sir, I hand it over to you and I have pinned your video. Anybody who is not able, who is on phone and not able to see Sir's video, so you can see Sir and you can pin his video on your screen. Uh, Thank you, Neetu, and welcome all of you to this again second session of Scleroderma awareness. As you know, winter is fast approaching us, and that is precisely the reason why I decided to talk about this very important topic. And because this is the major issue that patients of scleroderma would face during the winters. So Raynaud's is actually pronounced as Raynaud's phenomena. I'll tell you what it is, why it happens, how to do certain things to protect yourself, because this is the major issue, and in winters this can be a big problem. So what is Raynaud's phenomena? It's a cold or stress induced episodic color changes. The color can change from white or blue of the skin of the digits of hands or feet. So this is very important to understand. This is cold or stress induced episodic changes. It's not a permanent change, but an episodic change. And typically it can be white or it can be blue. So this is very typical Raynaud's that happens. So the tip of the fingers, typically the tip of the fingers, and you can see this abrupt cutoff, it can turn pale white and with time it can turn blue. So why is it called Raynaud's? That's one of the questions that most of you would ask. And this is basically because of this physician, Dr. Maurice Raynaud's, in 1862. He first observed this phenomena in a young girl in France who presented with this kind of a phenomena. And he at that time thought that there was local asphyxia or local loss of blood supply to the hands. And he described it, and simultaneously and subsequently he saw this in a series of people. And he described this phenomena first. And that is why it is called as Raynaud's phenomena after him. Now, why does this happen? And this is the most important thing to understand. So normally, if you look at our fingers, you have these small blood vessels which go and supply blood to the distal part of the fingers. So these are the blood vessels. And if you look at the blood vessel in cross section, this is the caliber or the lumen of the vessel in which the blood flows. And this is a cross section. You can see the wall and then you can see the lumen. So this is in a normal person. In a person who would develop Raynaud's, and sometimes remember, this can even happen in normal people. This is basically a response or an exaggerated response to cold. So normally in cold, we do get numbness in our fingers. We do get some kind of, blanching in our fingers. But that response can be exaggerated sometimes in normal people also, and people who have Raynaud's. So this exaggerated response is that there is constriction or tightening or spasm. So as you can see, these blood vessels, which are very well seen here, go into spasm. And because of the spasm, as you can see, the lumen, which was very open and the blood was flowing, it goes into a spasm and the blood is unable to flow into the lumen. And if you see this the hollow blood vessel, which is, the lumen is huge, here it goes into complete spasm. And as a result, the blood supply diminishes temporarily to the distal part of the fingers. And once there is diminution of blood supply, the blood carries oxygen. So oxygen also goes down. So initially it is white, and then oxygen, once it is removed from the blood, it becomes blue. So this typical episodic response of white, blue, and then again back to red is known as Raynaud's phenomena. Again, it can happen in the fingers. It can also happen in the toes. And sometimes if untreated, it can cause
permanent damage, which is very, very important to understand. So what are the triggers for this? So cold temperature is a very, very important trigger, and cold means not only winters, but also exposure to cold in summers, like an air conditioning or a refrigerator can also trigger it off. So it's not only in winters, but also in summers. Stress, very, very important. Both physical and mental stress can trigger Raynaud's. Smoking and vibrating equipments like hair dryer, mixies, these kind of things can trigger Raynaud's. So what are the symptoms and signs? So coldness of fingers, discomfort, which can range from pain, numbness, associated with discoloration of the finger. So only pain is not enough. Pain associated with discoloration means that there is a critical blockage of blood supply. And how do you make a diagnosis? Most of the times, the diagnosis is by a good history and physical examination. So when you see a typical history of fingers turning white or pale white or blue on exposure to cold or stress, this is Raynaud's. So we ask questions like, do you feel sensitivity to cold? But just cold sensitivity is not enough. Do the fingers change color in cold? And does it induce very sharply demarcated color? So you saw that very sharp cutoff. And ideally, if it is seen by a physician, then it's even more reliable. Sometimes there's a cold challenge, which is not done nowadays, is that you put your or immerse your hands in cold water there and then. But this is not done nowadays because this can actually trigger off a bad attack in a person who's susceptible. So the other ways are, you have infrared thermographic imaging, which is again not available in our country, but you can see a normal hand, which is good blood supply and red. And when the hand goes into Raynaud's, you can see the loss of blood supply. So thermal imaging can be a good way of detecting the disease and its severity. The other method is imaging. This is again a technology through which you can see in normal hand, you can look at the red areas where the blood flow is there. And in Raynaud's, you can see the loss of blood supply. So this is another method. The other method is that you have an ambulatory Raynaud's monitoring method. You have a band-aid kind of a thing which you can attach to your fingers and see. But most of these things are very expensive and not available with us. But we have a very simple fold capillaroscopy. And through a nail fold capillaroscopy, what we do basically is we put a drop loop form. But in certain diseases, primary Raynaud's. So Raynaud's are two types. One is primary Raynaud's, which is Raynaud's only in the absence of any other disease. And as I told you, sometimes people, which is Raynaud's secondary to something else. We know whether it is secondary to something else or only a disease in itself. So certain ways of differentiating this is, a primary Raynaud's usually occurs at a very young age. Cold or emotional stress can trigger it off. Attacks are very symmetrical. Symmetrical means they'll happen in both the hands simultaneously. There is no tissue damage like digital pitting or scarring in the fingertips. There is no history or physical of anything other than this Raynaud's. Antibodies are negative for most of the autoantibodies. And the nail fold capillaroscopy is normal. This by definition is primary Raynaud's. We need to differentiate this from secondary Raynaud's, which happens typically more than 30 years. It usually happens in female, but if a male is suffering, again, they suffer more of secondary Raynaud's. And you can have digital pitting, scarring. These are the first signs that this is secondary Raynaud's, secondary to. If you have autoantibodies, if you have other signs outside the nail beds of skin changes or other organ involvement, then you know it is an autoimmune disease causing a Raynaud's. And most importantly, finally, if the nail fold capillaroscopy shows those big, giant capillaries, what we call as giant or huge bulbous capillaries, then that is the first signal that this is secondary to an autoimmune disease. So primary Raynaud's has no cause, no known cause, but secondary Raynaud's is secondary to multiple autoimmune disorders. So scleroderma is the most common, but lupus, Sjogren's, myositis, MCTD, UCTD, all these disorders can present with Raynaud's phenomena. Trauma, mechanical trauma or hand vibration, that can cause it. Sometimes you can have abnormal
outgrowth of the ribs in the cervical area, which can cause it. And sometimes it can be associated with certain drugs, medications like beta blockers. So if anybody is taking some anti-blood pressure medications for the heart and other reasons, they can also sometimes cause. And certain other conditions can rarely cause this. What is also important to understand is we need to differentiate this from certain other diseases which can mimic Raynaud's. One is chilblains. So chilblains is very different from Raynaud's. This is again a cold-induced injury, but it does not happen on the tip. It happens usually on the dorsum, on the upper part of the fingers. And these are red lesions, and they're differentiated because they typically cause a lot of itching and burning. And sometimes you get these blisters. So this is the way of differentiating chilblains. The other condition is known as erythromelalgia. In this, there is just diffuse redness, no pale white or blue color changes, only redness and burning. So this is again a different condition. This is not Raynaud's. And finally, there is something called as acrocyanosis, which is just discoloration. And this is a persistent discoloration. Raynaud's is an intermittent episodic discoloration. This is a permanent discoloration, which is blue in color. It typically happens in the hands of women less than 30 years. It doesn't cause any symptoms. There is no associated pain, numbness, burning, nothing, tingling. And this is usually nothing harmless condition. It is not associated with anything. So once we have understood that this is Raynaud's, the question that most would ask is, can we cure it? And I would say that is a wrong question to ask. Can we treat it? And more importantly, can we prevent it? And this prevention is the most important thing. And the answer is yes, we can treat it and we can prevent it. So the first and foremost thing is no smoking and no stress. So stress has to be reduced. Physical and emotional stress, both, because both can trigger Raynaud's. The second is something called as layering. So wearing clothes in layers. So you wear an inner, then you wear some jackets over that, or shirts, then you wear sweaters, and then you wear jackets. So if you wear clothing in layers, that is one of the best ways of getting yourself protected. The other thing is either wearing gloves or mittens, as we call them. These are very, very important. So wear woolen gloves, wear comfortable gloves, which protect your fingers. And it's very important to start from now because the winters are fast approaching and we need to be very, very careful. So good protective clothing is the first and foremost thing. When you're using utensils, you can sometimes use these insulated mugs. They are very useful. You also, I think you can get in Amazon's these toe warmers and hand warmers, which are made of chemicals and they can cause instant reaction and warming. And you can stick them to your pad, to your feet and your hands, and this can protect you. So these are very important things. Exercises where you move your hands in a circular fashion quickly would increase the circulation of the hands. So this is almost like a waving pattern, a waving kind of a pattern. This movement also will increase the blood supply very quickly. So these are certain preventive things that you need to do. Is no stress, keeping yourself warm with layerings, wearing gloves and mittens, warm woolen gloves or socks. That's very important. And you can use these adjuncts like warm hand warmers, hand warmers, and foot warmers. They are very important. And then treatment is also sometimes very, very important, especially in the winter seasons. And we have to start from now itself. So what is happening is you have the nerve endings, and then you have this muscle, which is yellow in color, which is circling the blood vessel, and the wall of the blood vessel is green in color, and the blood inside is red. So what happens is there is exaggerated response. So the nerve supply the signal to the muscles that on exposure to cold or stress, and this is a increased signal, hyper signal, over signaling, and this causes the muscle to contract. Once the muscle contracts, then the lumen of the vessel also contracts, and then the wall of the blood vessel releases certain molecules which can further cause constriction, and those substances which can cause dilatation are not released or inhibited. And hence we have medications where we can prevent these contraction of the muscle. And you know, these are nifedipines or Nicardias and amlodipine or Amlovas, Stamlo, those kind of drugs.
We can prevent the nerve stimulation by drugs like prazosin. Then we can block these substances which are secreted inside, which cause contraction. So these molecules can be blocked by drugs like bosentan, ambrisentan. So you must have heard of names like Bosentas or Pulmonex, or those kind of drugs. And then we can increase the molecule release, which these substances which can cause dilatation. So on one hand, we can block the molecules which cause contraction. On the other hand, we have medications to increase the molecules which can cause dilatation, like sildenafil or Viagra. We can have tadalafil or Tadac, those kind of drugs. And finally, we can inject inside the blood vessels through intravenous route medications like iloprost or alprost, which can cause dilatations of the blood vessels, and sometimes you can take that as well. These medications, because they increase the flow of blood, they increase the flow of blood everywhere. So when the blood flow increases to the brain, it can cause headaches sometimes, hot-headedness or heavy-headedness. In the face, the blood supply can cause hot flushes, but these are normal things, don't worry. And in the leg, when they increase the blood supply, it can cause swelling of the legs. So these are normal things. There's no need to panic about it. It means that the medication is working. And sometimes when none of these medications work, we can go for Botox therapies. And as you know, Botox is a substance which is used to dilate the muscles, and that is why it prevents wrinkling. It is commonly used by the cosmetologist. And what we can do is we can inject Botox in these web spaces. So you have the blood vessels and the nerves which go on the side of the digits like this. They go on both sides. So what we do is we inject the Botox, and what that does is it stimulates the nerves, relaxes the muscles, and in refractory cases, this can work. So in a nutshell, this is all that is there about Raynaud's. So it's important to understand that Raynaud's phenomena is an episodic changes of colors starting from white going to blue. If it turns white and it turns back normal red again, it means it's a very early stage. But once it's changing to blue, that means the blood supply is substantially getting reduced. And if it stays blue for a very long time, it means that blood supply blockage is somehow getting more and more permanent. So that can be an alarming feature if you're getting multiple attacks, or if the attacks are more prolonged. That means it takes a lot more time for the bluishness to go away. It means that the blood supply is getting compromised for a very, very long time. It means that the spasm in the blood vessel is almost becoming persistent. And that happens in scleroderma sometimes because of the fibrosis. The blood vessels are no longer able to dilate. So those are very important signs to look for. And then you know that this Raynaud's is called Raynaud's because of the physician, Dr. Morris Raynaud's, who discovered it first. And it is very important to understand that this episodic changes can be the first sign of many diseases like scleroderma, lupus, Sjogren's, all can be with Raynaud's. And it's very important to understand prevention. I think somebody's mic is on. I would request all of you to put your mics on mute. So the other very important thing to understand is that prevention is more important, and prevention can be done early winters and sometimes in summers also by wearing good clothing, keeping yourself warm, drinking warm fluids, using proper protection like gloves and mittens. You could use these instant warmers. You could also use a heater or something like that to keep yourself warm. Important thing is to avoid stress, physical stress, mental stress, very important triggers. Smoking, of course, most of the people would not be doing, but even if you do, you have to stop it completely for Raynaud's. That's very important. And then finally, medications have to be started very, very early on in winters, because once these bluishness happens and they remain, they cause damage, and these damages initially develop like ulcers, then they develop as after healing, they become pits or scarring, and then resorption or gradually dissolving of the fingers can happen. So this can be prevented if the treatment is, so go to your rheumatologist early when the winter is starting, meet them and schedule a meeting, and then they must escalate the therapy for that winter month so that you are safe. And once the winter months are over and you are better, then you can de-escalate the therapy. So this is all that I have to say. And so if we can take any questions, I would be more than happy.
So I have two questions to start with. Till other people come up. So there is a therapy called HPOT therapy, hyperbaric oxygen therapy, which you only advised me I had taken, and my Raynaud's, in fact, my ulcers got improved. So can that therapy be taken as a Raynaud's prevention thing? Yeah, so it not as a prevention, it's mainly used as a treatment, and it's again not approved therapy, but it's one of the therapies which are being tried for Raynaud's. So we do give hyperbaric oxygen therapy for Raynaud's. For it's not actually for Raynaud's; it's more for healing of the digital ulcers. So hyperbaric oxygen is used for any wound healing, any kind of wound. So they give hyperbaric oxygen, and increased oxygen then leads to healing of the wound. So not really for Raynaud's, but more for the secondary wounds to Raynaud's, because as you know, once the Raynaud's has happened and the wound has happened, the wound can take a long time to heal because of the lack of blood supply. And then it can get secondary affected also. One second, sir. And then you need antibiotics. If you don't take antibiotics for a very long time, the wounds don't heal. It take a lot of time to penetrate. That's why. Right, sir. So another question is, in other countries, we have been reading that there are certain drugs like Iloprost, which people inject when winters start, which is actually a preventive technique, which is being used in other countries for Raynaud's. So is it available in India or something like that, which is available? So unfortunately, Iloprost is not available. So Iloprost can be given injectable and inhaled also, but it is not. But we have something called as alprostyn, which is called alprostyn, which is the prostacyclin I2 inhibitor. So we have this, and this can be given intravenous. You can take this intravenous in the hospital. It is given in time, slowly Okay. over 5 days. It has to begin every day. You can take it 3 hours, go home again, again take it. So over 3 to 5 days, you can take it on a daily basis, and that can help. Right, sir. Uh, okay, a lot of people have raised hand. प्रियंका राकेश जी, आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए. Was the video clear to all of you? Because I found somebody saying that video was not clear. See, right now for most of the people it's Hello? clear. हाँ जी Hello? सर. अरे मेरे वाइफ को स्क्लेरोडर्मा है, तो उसमें उसको उंगली में गैंग्रीन हुआ था. अभी अच्छा है और आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट की थी, तो अभी बेटर है. उसमें पहले ZYQ 200 था, उसके बाद दूसरा स्टेज में चली गई थी. MFF का डोज दिया था, उसके बाद आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट किया, उसके बाद अच्छा है. पर उसमें यहाँ मैंने जो डॉक्टर है उसको बताया, तो उसने बोला था कि निमोनिया की रसी देने की वैक्सीन, तो दे सकते हैं? हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं. निमोनिया का वैक्सीन जो दिया जाता है विंटर मंथ्स में, वो लंग्स के लिए है. जो रेनॉड्स है, यानी जिसमें उंगलियां नीली पड़ जाती हैं या काली हो जाती हैं, उसके सबसे इम्पोर्टेंट जो दवाई है वो है, आपको बचाव करना है, उंगलियों को गर्म रखना है, गर्म जुराबें पहननी है, गर्म चीजें पकड़नी है, गर्म चीजें खानी है. ये सबसे पहला चीज, ठंडे पानी में हाथ नहीं डालना है. उसके बाद ये MMF जो है, इसकी दवाई नहीं. MMF मेनली लंग्स के लिए काम करती है, जो फाइब्रोसिस हो रहा है या स्किन के लिए काम करती है. ये जो उंगलियां नीली पड़ती हैं, इसके लिए अलग दवाइयां होती हैं, जिनको हम वेसोडायलेटर्स कहते हैं, जो उंगलियों में खून का बहाव बढ़ाती हैं. और ये दवाइयां हैं जैसे निकार्डिया हो जाती है, एम्लोडिपिन एम्लोवास हो जाती है, टेडालाफिल या टेडैक हो जाती है, या सिल्डेनाफिल हो जाती है, मेगालिस, मियालिस, सियालिस, इस नाम से आते हैं ये दवाई. ये उंगलियों के खून के बहाव को बढ़ाते हैं. ये अलग दवाइयां हैं, MMF अलग है. तो याद रखिए, MMF लेने से उंगलियां नीली पड़ना बंद नहीं होंगी और इनमें गैंग्रीन होना बंद नहीं होगा. गैंग्रीन को रोकने के लिए विंटर मंथ्स में ये दवाइयां शुरू करना बहुत जरूरी है. और जैसे नीतू ने कहा कि कभी कभार ये इंजेक्शंस होते हैं जो हॉस्पिटल में विंटर से पहले लगा लिए जाते हैं,
उससे भी विंटर मंथ्स में ये उंगलियां खुल जाती हैं और ये नीली, क्योंकि एक बार गैंग्रीन पड़ा है मतलब उंगलियों की ब्लड सप्लाई, वहां खून का बहाव कम है और ऐसे में हर विंटर में प्रॉब्लम होगी। तो विंटर शुरू होने से पहले ये बहुत जरूरी है ये दवाइयां ली जाए। और आप ये समझने की कोशिश करो, ये दवाइयां बहुत बहुत सेफ होती हैं। आपने देख लिया अभी कोरोना के टाइम में, ये जो कोरोना का वैक्सीन है ये कभी आया नहीं अभी तक। क्यों? क्योंकि ये मल्टीपल फेज ट्रायल्स में चलता है। जब तक इसकी सेफ्टी नहीं पता चलती कि ये सेफ है, तब तक ये नहीं आती है। उसी तरह हर एलोपैथिक की दवाई ये हमेशा मल्टीपल ट्रायल्स, मल्टीपल लोगों में, दुनिया में हर जगह कई देशों में दी जाती है। और जब ये पता चलता है कि ये दवाइयां बेहतर हैं, इनमें साइड इफेक्ट नहीं होते हैं, बहुत रेयर हैं और ज्यादातर लोगों में 99% लोगों में फायदा करती है, तभी ये दवाइयां अप्रूव होती हैं। तो ये बहुत गलत फहमी लोगों के दिमाग में होता है कि एलोपैथी की दवाइयां नुकसान करती हैं। तो ऑन द कॉन्ट्ररी मैं बोलूंगा कि आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उसमें ये ट्रायल्स नहीं हो, तो हमें मालूम नहीं है किस में सूट कर जाए, किसी में साइड इफेक्ट हो जाए, वो नहीं मालूम है हमें। और क्या साइड अभी इफेक्ट हो जाएगा ये नहीं पता है। तो मेरे हिसाब अभी से तो विंटर जरूर ये अभी दवाइयां जो खून के बहाव बढ़ाती हैं उनके लिए। अभी तो बेटर है। अभी 2 साल पहले ट्रीटमेंट की थी तो अभी वो नीली नहीं पड़ रही है उंगली। लेकिन आप पढ़ेंगी क्योंकि विंटर्स आ रहे हैं, तो ये बहुत ध्यान रखिए कि विंटर्स में उनको बचा के रखें। और जरा अगर आपको लगे कि उनकी पड़ रही है, तुरंत डॉक्टर से मिलके उसकी खून का बहाव बढ़ाने की दवाइयां शुरू कर लीजिए। दवा तो मेडिसिन तो आयुर्वेदिक की चल रही है, फिर भी हम कंसल्ट करते हैं डॉक्टर से, एलोपैथी के डॉक्टर से, और वो रिपोर्ट करके वो चेक कर लेते हैं और वो बोलते हैं कि अच्छा है, इम्प्रूव है। पहले हम उसको बताते थे डॉक्टर को 3-3 महीने में, तो थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा था, अभी डाउन हो रहा है ऐसा लग रहा है, डॉक्टर ही बोलते हैं। इसमें एक चीज याद रखिए, मैं एक चीज और गलतफहमी बताता हूँ। जो स्क्लेरोडर्मा है, इसमें जो स्किन की चमड़े की जो टाइटनेस होती है ये बढ़ती है और फिर धीरे धीरे दवाइयों के साथ बढ़ जाती है। लंग की फाइब्रोसिस पहले 5 साल में बढ़ सकती है बिना इलाज के, और इलाज के साथ वो घट जाती है। लेकिन ये जो रेनॉड्स है, जो उंगलियों का नीला पड़ना है, ये जिंदगी भर रहता है, ये कम नहीं होता अपने आप। इसके लिए गर्म रखना पड़ता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा और उंगलियों को बचा के रखना पड़ेगा। और हर विंटर्स में अगर नीली पड़ रही है, जरा भी आपको लगे, तो उसकी दवाई लेनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी सब चीजें इंप्रूव कर जाती हैं, ये रह जाता है। तो ये ध्यान, और ये लक्षण कई बार बाकी सारी चीजें शुरू होने से बहुत पहले शुरू हो जाता है। तो बहुत से स्क्लेरोडर्मा में आप देखेंगे कि उंगलियां नीली होनी तो कई साल से शुरू हो गई, उन्होंने इग्नोर किया, लेकिन बाद में स्किन में और बाकी चीजों में प्रॉब्लम आई। तो ये याद रखिए कि इसको जरूर करना है। ये हर विंटर में परेशान करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। इस पे एकदम नजर रखिएगा, उनको एकदम बचा के रखिएगा। और जरा अगर आपको कभी लगे कि उंगलियां नीली पड़ रही हैं, तो तुरंत उसकी दवाई शुरू कर लीजिएगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होनी थैंक चाहिए। और कुछ जगहें होती है जहाँ पे सर्दी उतनी ज्यादा नहीं होती, वहां पर बहुत अच्छा रहता है। जो लोग ज्यादा सर्दी वाली जगह में रहते हैं उनको और परेशानी हो सकती है। थैंक यू सर। Sir, I have a question. Sir, actually, I have small kids, huh? So though, मतलब I have a maid and all maid है, लेकिन फिर भी छोटा मोटा we have to do the work. तो अभी क्या, और इससे पहले क्या कि I was in दुबई, तो मेरा ये first winters है ना, right now I'm in Jaipur. तो मेरा ये first winter है basically after scleroderma, और last year जबकि दुबई में इतनी ठंड नहीं होती, फिर भी मेरे टो के जो राइट थंब में राइट में उसमें गैंग्रीन हो गया था। तो वो उसके बाद उसके अंदर पस चली गई, देन इट नीड्स टू गेट ऑपरेटेड। वो डॉक्टर ने पूरा नेल रिमूव किया। और अभी यहाँ पर क्या है कि बहुत ठंड है, तो मुझे थोड़ा एक ये है कि अगर थोड़ा सा भी काम जैसे मुझे ऑन अर्जेंट बेसिस करना पड़ता है, उसके लिए मैं क्या करूं एंड हाउ डू आई प्रोटेक्ट माई सेल्फ। प्लस ये जो मेरा जो नेल में मेरा सर्जरी हुआ था, क्या इसमें सेम दोबारा इसमें हो सकता है कि यहाँ पे ब्लड सप्लाई नहीं है अभी भी? सो दीज आर माय लिटिल बिट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट बचाव कैसे कर सकते हैं। द फर्स्ट थिंग इज दैट अपने, सो यू हैव टू यूज वार्म वाटर। वर्किंग इज नॉट अ प्रॉब्लम, काम सब कुछ कर सकते हैं, बट यू हैव टू यूज वार्म वाटर। अगर आप डिश वॉशिंग कर वार्म गर्म पानी, try to wear one of the gloves. If you can wear a gloves, that would be very useful. And warm water used for both washing utensils and washing clothes, everything has to be slightly warm.
So working is not a issue. Working से problem नहीं हो. But it is only जब आपकी fingers expose हो रहे हैं cold को, तब problem हो. And एक चीज याद रखिए, only fingers पे नहीं होता है, it's the body. So body अगर आपने warm रखा है, you're wearing layerings of clothes and your body is warm, वही warmth hand में circulate करती है. So first thing is to keep the body warm by layering of clothes, and second thing is hands को protect करना है. Working में कोई problem नहीं है, you should work, there is absolutely no problem. Second thing is that yes, अगर जो feet में जिस finger में gangrene हुआ है, उसकी blood supply is definitely compromised, and you can have a recurrence in that, or you can have in other areas. So be very careful. And अगर आपको लगता है कि pale white या bluish discolorations हो रहे हैं intermittently, then don't ignore, don't wait for it to become gangrenous. उससे पहले ही preventive medication ये 3-4 महीने लेना बहुत जरूरी है. That would give a lot of relief and prevent a lot many complications later on. And using of heater, like जैसे आपने बोला room में heater रखते हैं हम, तो heater use करने के बाद like from one room if we'll go to another room, it won't get that exposure of cold like. Can, तो उसके लिए the moment you're moving out of the room, you'll have to wear the gloves. Okay, gloves, okay. और gloves में भी जैसे the one question I have कि एक तो woolen gloves हम पहनते हैं normal, उसमें भी क्या है कि थोड़ी like you know that wind is passing. Actually, तो उसमें भी मुझे कई gloves are बार not the ideal gloves. The ideal gloves are those leather gloves which have fur inside. leather gloves. हाँ, leather. Okay, leather gloves. Yes. They will give you And socks. socks. And socks. Layering. More important is layering. So you can wear one cotton Layering. and then you can wear another woolen over that cotton. So layering is more Okay. important because woolen socks अपने में नहीं रोकेंगे. You'll have to do layering. 2 या 3 layering कपड़े के पहनने पड़ेगा. That is important. Hands में भी. That is important. So the best way is when you look at equipments for mountaineers, when you look at equipments for those kind of people ना, वहाँ पे आपको मिल जाते हैं. Okay, okay. Decathlon and कई shops है जहाँ पे you will get these kind of protective gearings. And ये protective gearings जो होते हैं, Decathlon is one area I know जहाँ पे के काफी उसके लिए मिलते हैं. वहाँ पे you can get these warm jackets, warm gloves, camping वगैरह के लिए. Wait, They are very very. can you tell me where we can You can get? get it online also. I think Decathlon is one. I know is one store. Amazon पे भी देख सकते. Okay. So camping gloves and those kind of gloves, they are really warm. Not simple woolen wale, but they are actually warm. They have fur and all inside, and ऊपर से they have leather, and they are very comfortable. Okay, So, okay. doctor, I have these Thank you. gloves. These gloves I wear, and upon that I wear these gloves while going out, so they keep me warm enough. Excellent. These This are is- from Decathlon. Yes. Yes. Kavita and sir, actually the meeting will end now. So please log in again using the same link. Everybody, please log in again using the same link. So this is what Kavita is showing exactly. So 2 layering she is doing. Wait, One layer. actually, And I didn't before that, show the other one, the second one. Yeah, this is the first. Actually, we can't see. Okay, okay. So these are Mani- the 6 ones that I showed you, the photograph that I showed you, those are. Decathlon से ऑनलाइन मिल जाएगा. आप Decathlon वगैरह पे ऑनलाइन ले सकते हैं. 2 लेयर की gloves पहनने हैं, अंदर एक पतला वाला ग्लव्स और उसके ऊपर ये मोटा वाला. Okay, so Priyanka, you wanted to ask some question, and we had Shalaka who wanted to ask question, and there was one more person. Okay, Shalaka, you can please go ahead and ask. Thank you, Nitu. Can you hear me? Yeah, please tell. Okay. Hello, Dr. Rath. I'm Shalaka. I'm from Pulmonary Hypertension, India. And Yeah, my welcome. great presentation, simple and crisp, really liked it. My question to you is, a lot of the pulmonary hypertension patients are already on the drugs that you have mentioned, including some are on iloprost. And in spite of that, we've seen incidents of Raynaud's in them. So what is the protocol there? What is the Very protocol there? Very important question. So the first thing is that these medications will not prevent Raynaud's. Okay. ये याद रखो. But they'll protect from damage. Raynaud's will still happen. The discoloration may still happen, but it will not progress to gangrene. Okay. So this is Okay. very important. Yeah, this is very important. So the drugs for pulmonary hypertension and for Raynaud's are the same because the pathophysiology को
चलो the way भाई, you शुरू get कर रहे हैं आप fibrosis लोग। and contraction of the blood vessel, similarly you have this blood vessel called as Right. pulmonary artery, which is हाँ, supplying, मैं किसी चीज को and that आगे also brings pain. The same medicine will also, if you're taking medicine for Doctor, pulmonary sorry, I couldn't hypertension, hear you the that last boosts 1 minute. Just 1 moment. lot of, can we move I this think to- Neetu is ऐसा है, अभी मत लो, रात हाँ. को लेना सीधा। अपनी वाली तो अपने हिसाब से लो, वो तो अपने हिसाब से खाओ। देखो, So अपनी वाली basically खाने ये से है, पहले खानी होती the है drugs बाद में। which are used for pulmonary hypertension would तो work खा लो for अपनी। Raynaud. But is there anything else beyond that? मैं गुड़िया से ही बात So the कर other रही thing हूँ। is calcium channel blockers like Okay. nicardiatide, amlodipine. These do not work for pulmonary hypertension, but they Okay. work for Raynaud. Then there are drugs like fluoxetine, Flunil, or what we call as fluoxetine. They work for Raynaud, do not work for that. Okay. But there are some new. Neetu, you need to, yeah, sorry. Then in severe cases, you could even go in for Botox. So these are certain different things, slightly different things for Raynaud's. But Doctor, yes, sorry, I couldn't for hear the one medication- part. You mentioned calcium channel blockers, Botox, and something else. calcium channel blockers are one group of drugs which are not Yeah. used for pulmonary hypertension, but they will Yeah. work here, like Nicardias and amlodipines and those kind of drugs. And the second is fluoxetine, Flunil. Okay. It's a selective serotonin reuptake inhibitor. It also works for it. Okay. All right. Thank you so So much. many times it is important that we combine 2 or 3 drugs, because giving one drug at a very high dose causes more side effects. So my Correct. concept is always you combine 2 or 3 drugs which act at 3 or 4 different levels. So one drug is acting at the muscle level, like a Yeah. calcium channel blocker like Nicardia, causes muscle dilatation. Another Okay. drug is acting at the lining of the blood vessel like bosentan or ambrisentan. Or another drug is working to cause dilatation like a tadalafil or sildenafil. Yeah. Then you have low dose aspirin, which again prevents the platelet plugs inside the blood vessel. Then you add fluoxetine. So sometimes a combination of 4 or 5 drugs at low dose is very well tolerated, and it really Okay. takes care. Okay. Thank you, doctor. Hello, sir. I'm Shraddha. Hi, Shraddha. Sir, actually मुझे last 1.5 year से scleroderma and ILD diagnosed है। तो सर रेनॉल्ड का जो है वो विंटर्स में मैं जब हॉट वाटर से भी जैसे बाथ लेती हूँ या हॉट वाटर यूज करने के बाद भी, या कभी कभी जैसे लंच ले रही होती हूँ तो हाथ ठंडा हो जाता है उसको, तो भी ब्लू होता था लास्ट पूरा ईयर। और अभी भी जैसे विंटर स्टार्ट हो गया है तो मैं गर्म पानी से नहाने के बाद भी हल्का ब्लू होने लग गया है। और मैं जो डोज ले रही हूँ वो सिल्डेनाफिल भी 50 mg ले रही हूँ, निकार्डिया 30 mg ले रही हूँ। तो सर तब भी रिस्क है क्या कि मैं हॉट वाटर भी यूज कर रही हूँ और टैबलेट्स भी ले रही हूँ और ब्लू हो रहा है? तो प्रॉब्लम हॉट वाटर का नहीं है, प्रॉब्लम है हॉट वाटर के बाद का। सो व्हेन देयर इज अ सडन चेंज उसमें हो जाता है। सो दैट इज द अदर प्रॉब्लम। तो उसके लिए ये है कि एक तो सिल्डेनाफिल की डोज आप कैसे ले रहे हो। सो इट इज टू बी टेकन नॉट वंस अ डे बट 3 times a day, बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट एक्टिंग ड्रग। उसकी हाफ लाइफ बहुत कम होती है, तो उसको दिन में 3 बार लेना होता है। टेडलाफिल एक ड्रग है जो दिन में 1 बार लेना होता है। तो अगर आप 50 mg वंस अ डे ले रहे हैं तो वो एक इश्यू है, उसको आपको दिन में 3 बार लेना होगा। और उसके बाद भी अगर कंट्रोल नहीं है देन वी मस्ट ऐड 2 or 3 अदर डिफरेंट ड्रग्स ताकि वो उसे कंट्रोल हो जाए। अगर पेल वाइट हो रहा है, ब्लू नहीं हो रहा है, देन दैट्स अ गुड साइन। ओके सर, मतलब सर उसको लाइट नहीं ले सकते, डोज बढ़ाना हो चाहिए उसका। यस अगर आप 50 mg वंस अ डे ले रहे हो सिल्डेनाफिल, वो काम नहीं करेगा। रादर आप 20 to 25 mg दिन में 3 बार लें, वो ज्यादा काम। ओके सर, थैंक यू सर। Doctor, And I got some people have used Alloprost, which is very excellent. So then they must share the source also so that others can also use Alloprost. Good evening, sir. We use Alloprost. Hanji. Sir, I have Raynaud's, but I have burnt in my fingers of my hand. So there are contractures in my fingers. So I need to get a surgery done for that contractures to be removed. Does that affect my Raynaud's or my scleroderma in any way, or will there be any complications, or can there be complications for this? Scleroderma mein skin healing is slightly delayed and difficult. Okay.
So that the plastic surgeon has to know. If the skin tightening बहुत ज़्यादा है स्क्लेरोडर्मा की वजह से, जी तो सर्जरी में थोड़ा रिस्क है. अगर स्क्लेरोडर्मा की वजह से स्किन में टाइटनिंग बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन बर्न की वजह से कॉन्ट्रैक्टेड ज़्यादा है, जी वो कर सकते हैं. राइट, थैंक यू सो मच. डॉक्टर रथ, मेरे पास एक क्वेश्चन है आपके लिए. आपने बताया कि हम लोग कभी कभी जो फिंगर्स के लिए रेनॉल्ड्स में हम लोग बोटॉक्स देते हैं, तो क्या बोटॉक्स यूज करना सेफ है स्क्लेरोडर्मा में? एंटीबॉडीज हमारी उसकी वजह से? नहीं, कोई उसका रोल ही नहीं होता है. बोटॉक्स बेसिकली क्या करता है, इट इज अ बोटुलिनियम टॉक्सिन करके एक सब्सटेंस होती है जो बेसिकली मसल्स को थोड़ा पैरालाइज कर देती है टेम्परेरी, और जो ब्लड वेसल्स के साइड में नर्व्स होती हैं उनको भी वो थोड़ा रिलैक्स कर देता है. उससे जो है वो कॉन्ट्रैक्शन रिलीज हो जाता है और ओके, तो अगर मुझे कॉस्मेटिक यूज उसका कुछ करना है तो उसमें सेफ है कि नहीं है ये? हाँ, बिल्कुल से. ओके ओके, थैंक यू. बस यही क्वेश्चन था. Doctor, I have a question. I've been having Raynaud's ever since I was diagnosed. Here, the place I stay, the winters are quite harsh, and every time I do get Raynaud's attack. And what my doctor does is he gives me Pulmopress. I take it every day, but when there is, when the winters are harsh, he just asks me to take it twice a day, but that doesn't seem to help. I'm on blood thinners and calcium blockers and all that, but just taking Pulmopress twice doesn't seem to help because what I is the do dose get. of Pulmopress that you are taking? Sorry? What is the dose of Pulmopress that you are taking? It's the normal one. I mean, it's not a very high dose. I'm So not it sure. has no. So you are taking it once a day, na? No. So in winters, I take it twice a day No, I because. think more important is you add 2 or 3 different mechanism of action drugs. So Okay. apart from Nicardia, you must add ambrisentan, and you have to add 2 or 3 different style of drugs which act differently, rather than just increasing the dose or the frequency. That is important. Okay, so Pulmopress 20 mg is what I take, and in So you- winters I take 40. Yeah. 40, but you have to take it once. You cannot take it twice because the half-life of Pulmopress is such that you should be taking it once, and with that you can add another drug. So you are Okay. taking Cardia, that is one. You can add Fluoxetine, that is another, and then you can add one of these Citaxentan or Ambrisentan, that should be added. Okay. Thank you so much, doctor. Thank you. Hello, doctor. Actually, my doctor suggested me a nitroglyceric ointment for the for this Raynaud's. But actually, how it works and where exactly we have to apply to the fingers? So nitroglycerin is again a drug which increases the blood supply there. It causes basically it's a nitrate, so it causes vasodilatation or dilatation of the blood vessel. It's basically a cream which is applied. What is important to understand is it should not be combined with a drug like tadalafil or sildenafil. Never take it in combination because it will cause a sudden drop in blood. I'm taking sildenafil citrate for the 50 mg. Medicine. That is the medicine. So they should not be used together. A nitrate is never to be used with sildenafil or tadalafil. That's a very, very important basic thing. It's one of the warning things. If you look at the sildenafil and tadalafil, it should not be used with any nitrates like nitroglycerin. So do not use it with tadalafil or sildenafil. Okay, but this is nitroglyceric ointment. It is an ointment. Sildenafil is a tablet. So still it affects. No, even ointment also ultimately, not to that extent, but it still can, because ultimately sometimes you can end up applying a lot of it on your fingers, and then it can cause, because it will get absorbed ultimately. So whenever a drug is absorbed, it can be absorbed through oral route, through the skin, through the intravenous. So there are different ways of giving the drug, but ultimately it will get absorbed into the body. Okay, but my doctor never suggested like this, because he only told that use that. So it will cause in small amounts, it may not, but it's one of the interactions which one has to be careful.
with sildenafil or tadalafil. Nitrates should not be used, they should be avoided. One more question. Once I asked that the TEDAT has to be used only those who have pulmonary hypertension. Is that like No. It is used for pulmonary hypertension, but pulmonary hypertension dose is usually 40 mg. The dose that we use in Raynaud's is usually 20 mg. So remember, it is used for both. now currently I'm taking losartan and sildenafil. So TEDAT is not necessary, na? No, not necessary. If you're taking sildenafil and tadalafil are the same group of drugs. Oh. If losartan is not helping you with sildenafil, then you need to add a different group of drug, like ambrisentan or a bosentan, like a fluoxetine, like an amlodipine or a nifedipine. Okay. Thank you, sir. Thank you. Doctor, I have a question. You have prescribed Plumonex 10 to me, but I just want to know कि it should be taken daily or once a week? Daily. Daily. But Pulmonex is I don't have any problem in breathing. I have read in the internet that it is for the person who is having breathing problem. No, it is used for two things. One, of course, is the pulmonary hypertension, which causes breathing problems. The other is it is also used as a vasodilator. That is for Raynaud's. Okay, so I have to take it daily, once a Because day. what I have seen with my patients is never err on the lower side. In winters, always err on the higher side. So you must go full-fledged, and you can decrease with time, but never take a risk, because one gangrene is irreversible. Once the finger is gone, it is gone. So you have to wait for that finger. Take the maximum tolerated dose. Normally, when we give medicine, we give the lowest tolerated dose. And give the maximum tolerated dose, which gives the maximum efficacy. Because here we cannot wait for a gangrene to happen. We should prevent it at all costs. So whatever dose is tolerated, maximum dose, you should go up to that. Sir, just wanted to ask thank one you. more thing. Sir, nausea and minor headache with tadalafil is normal, sir? Yes, no. Okay. So headaches, and very rarely, mind you, even bleeding from the nose can happen. Right, sir. It is a very rare, but I have a lot of my patients do have that. उससे भी घबराना नहीं है. अगर if it is not a severe bleeding, don't worry about it. And mild head, that is why we prescribe tadalafil at bedtime. Right, sir. Thank you, sir. Good evening, doctor. I have a question. I have the hand massager, doctor. Is it okay? Can I use the hand massager to improve the blood circulation? So any kind of vibrating equipment will trigger the Raynaud's. So I would not suggest a hand massager at all. Okay. Like I have to insert my hand, it will massage the fingers. Massage will be like a vibration, and that vibration can trigger Raynaud's. Remember this. Okay, doctor. Massager is not a good thing. And so there is applying some warm oil on the hand, that is a different. But these mechanical equipments of massages, they have vibrations in there. That can trigger it. So rather you can have your maid or somebody just apply a warm oil on your fingers and gently massage it. That would be a better way of circulation rather than using a mechanical massage. Can I use the cotton gloves on my fingers, and can I insert the... Use a cotton gloves. I mean, depending on the temperature, use a cotton gloves. If it is that not enough, then use another glove over it, and then you can use a third glove over it. So sometimes you have to use 2 or 3 layerings. That will give you good protection. Okay, doctor. Thank you, doctor. So like you told that there is no point of taking the massagers and all. I have like that hot water, like not exactly a bottle, but it's like once you get it heated from the charger, and then you can put your hands in that. So is that okay? Yes, that's a good thing. That's okay, like you get, because then it will give that instant warmer. So you need a warmer. You need something which is warm and which keeps you warm rather than a massage. This is a very good thing. This is actually the thing you need. Okay. And doctor, there's one more thing. Some doctors had advised that, I don't know the name of the therapy. Like there is a chamber in which you go and you have to sit for maybe some minutes and all. Hyperbaric oxygen therapy.
that is done. That's done mainly Then they will for, give you oxygen, yeah, and all. Is it okay to have that? no, that's only once there's a wound, not for this. Not for If this. there's a wound which is non-healing, then we give hyperbaric oxygen therapy, but not for Raynaud's. Okay, not for Raynaud's. Okay, thank you. Sir, this is Dinesh here. Good evening, sir. Hi, Dinesh. Sir, I have. Hi. Sir, I have. I've been diagnosed in 6 years. Subsequently, I was also diagnosed with ED related to scleroderma, and What- I was what on Silden. ED, erectile dysfunction. Okay, and I was on sildenafil and subsequently even moved to TADAC. Basically it was for Raynaud's. It never helped me with the ED part. But sir, these medicines were, causing me swelling on the penile region. And I had to stop it. And eventually I've been just on the Bosentan 62.5 mg. Initially Trental 400 I was taking thrice a day, which was, very, very, very helpful. The medicine never, with the medicine, I never had any digital ulcers, but I believe there was some short supply of that medicine, and I was then subsequently switched to Bosentan. But so there are some situations where even the Bosentan is not helping with the Raynaud's as well as with the ulcer, and I have mild PAH and ILD. What can be done? So the other drugs that you can use, there's a drug called Riociguat. Okay. So this Riociguat is a new drug which is used for pulmonary hypertension. It's again a vasodilator that you can use. It is you basically used in people who do not tolerate tadalafil or sildenafil. So you can use that drug. It's a very good drug. Also, we have other drugs like I told you, nifedipine. That would be a very good drug, or an amlodipine would be a very good drug. Fluoxetine would be another very good drug. So these are some of the other medications that you can definitely use for your Raynaud's and may help in your EDS. Sure, I'll check with my doctor. Thank you so much. Any other questions, any other suggestions, any other experience that people have had? Because I'm sure you are the best people to innovate yourself, and somebody can share their experience as to how they are using or protecting themselves against Raynaud's. Sir, we have Sheetal with us. She lives in Australia. And in fact, only through her we came to know that she has used Iloprost earlier. Sheetal, are you there? That's what I was wondering. That Iloprost. Yeah, Yeah. So, Sheetal, would you like to share your experience? Yeah, for the Iloprost. Yeah. Actually, doctor, what happened that I used to take some tablets for my Raynaud's, but it was giving me headache. And when I used to go at work, I was not able to see the screen. So I just complained this to my doctor, and then she suggested me to go for Iloprost. So this is the first time I took in the month of April, where it's a peak summer, winter time in Australia, in Melbourne. So that infusion was actually for 6 hours, and then they suggested me to go with the speed of some 30 ml or something in 1 hour of time. So what was happening, like during that infusion, like I was like, I have gone through actually worst time of my life, where I was having continuous headache and vomiting. So that 6 hours of like throughout the infusion, I was actually, going through vomiting like every now and then. So then the next day, what doctor did, that before they start this infusion, they gave me the vomiting tablet to suppress the vomiting. And then they started this with the 20 ml. So they just, on that second day, they just give me only like with the speed of 20 ml. So my drug, like my infusion intake on the second day was low, but they said like something is still better than nothing. And the third day I was okay. So after that, like after 1 week of time, I realized that, after taking that my Iloprost infusion, I was having a very less Raynaud attack. And I actually posted a photo of having ice cream in the peak winter with my fingers not turning blue at all. So I actually found it very useful, like when I took that. And now they said like if I take in the start of the winter,
it will be actually very useful. So I'm not taking any tablets for Raynaud. It's just that 3 days infusion like I did take for this winter, and I'm all good for the Raynaud. Yeah, that's a very nice experience. Sorry, I was logged out. So we also have here alprostadil, which can be given as an infusion over 3 to 5 days. So a lot of you could go and request your treating rheumatologist, and they could give you this alprostadil infusion. You can take it over 3 to 5 days, and that can also help you go through the winters. So this infusion we have to take like monthly. So sometimes it depends on what kind of situation. So it depends also on the severity of the disease. So it would ideally be monthly. In some people I've seen it can go right through the winter also. It depends on the stage and the severity of the disease. And it doesn't have any later side effects? No. Immediate side effects only, no long-term or later side effects. Immediate side effects are the same: headache, a drop in BP. So monitor it and give it through a slow intravenous infusion. See, because all these basically dilate the blood vessels. So the blood pressure can come down. Now, another thing, what happens, many doctors, they become afraid of giving these things because when they measure the blood pressure of scleroderma patients, because of the tightness of the skin, the blood pressure comes low. But remember, that is not the true blood pressure. So that is why in scleroderma, in my patients, even if the blood pressure is 80/50, and I still give them. And I've never had a problem till date, but they have a very good response when they do. So we need to be hospitalized for that. Yeah, for this intravenous thing, you have to get hospitalized. Hospitalized means sometimes you can just stay for 3 hours, and then again you can go back home. So it's given over 3 to 4 hours daily for 3 to 5 days. ये देख तो फिर हो गया अरे यार बैग मार दिया होगा Sir, I have a question. My husband is suffering from scleroderma, but right now proteinuria is not getting controlled. Means 4-5 times we did the reports, but it is not coming under control. 2 times endoxin our doctor had did, but still NVAS 5 mg, but it is not getting under control. So And scleroderma, creatinine, we did creatinine, na? It was normal and GFR is also normal, but this proteinuria is not coming normal. So proteinuria in scleroderma will not happen per se. It is very important to understand. If there is proteinuria happening, we must find out why there is proteinuria. So proteinuria can happen because of the renal artery involvement. So you have to look at the Doppler of the renal arteries, whether there is any renal vein thrombosis. So that is very, very important. And if there's nothing in the renal arteries, then you have to look for another associated disease like lupus or sometimes antiphospholipid antibodies, and they must undergo renal biopsy if required. So it's very important because proteinuria per se in scleroderma will not happen. It can rarely happen in something called a scleroderma renal crisis. In that, creatinine go up, pressure sometimes can go up. That is very important. So only proteinuria, mild proteinuria is okay, but how much of proteinuria is he having? I think we lost the connection with them. Ma'am, can you please share Jitendra's proteinuria numbers? I think we lost them, sir. Hello, sir. Hello, sir. Yeah, my wife is suffering from scleroderma and ILD from last 6 years. Okay, and we are going through the treatment from CMC Vellore. So right now disease is stable, so but we are planning for pregnancy. So can you give us some suggestions? Yeah, so And pregnancy Raynaud, can be planned. Two things. So for Raynaud's in pregnancy, the drug which is safe is nifedipine or Nicardia. One, what is important to understand that in pregnancy there is an increased blood flow. So most of the Raynaud's actually will improve during pregnancy. Don't worry about that.
What is more important Okay. to understand is if she is taking mycophenolate MMF, that has to stop. Yeah. So MMF, she is taking Yeah, that will MMF from stop. last is 5 years, but Yeah. we have told to doctor to we are planning for pregnancy. So after that, they has stopped that medicine, and we are taking Azuran Yes. 75 Yes. mg from last 6 months. Yes. So now you can plan for pregnancy. What we can do. Hello, sir. Sir, what we can do for Raynaud's? For Raynaud's, Hello? you can take, for Raynaud's, you can take nifedipine up to 60 milligram is safe in pregnancy. So that can be given if you develop Raynaud's in pregnancy. But as I said, most of the times the Raynaud's will improve in pregnancy Okay. because of increased blood flow in the body. So don't worry about Which Raynaud's. medicine you said, sir? Nicardia Which retard, medicine? nifedipine. Okay, retard. Okay. Sir, I had a sleeping problem as well, so I was taking on Prothedian 75. Now I have stopped that. In case if I had that issue again, then I should take that No, you can take amitriptyline, that is safe in pregnancy. amitriptyline. Amitriptyline. It comes under the name of Triptomer, Amexide. Triptomer. Okay. Those are safe in pregnancy. Okay. And sir, another thing like sir, I have pulmonary hypertension as well. For that, I am taking Pulmonary that one. hypertension is a major problem for pregnancy. If the pulmonary hypertension is mild, it is okay. But if it is moderate to severe, then pregnancy ideally can be very difficult and should not be planned. Sir, it's Now okay. the medications for pulmonary hypertension, tadalafil and all, their safety is not well established in pregnancy. So we don't know whether it is safe or unsafe. Both ways we don't know. But pulmonary hypertension, if it is moderate to severe, then pregnancy should not be planned because it will have adverse effect. ओके सर एंड सर मुझे रेनॉइड्स प्रॉब्लम बहुत ज्यादा परेशान करता है थोड़े से भी ठंड में इवन रेनी सीजन भी में बहुत ज्यादा मैं परेशान होती हूँ तो और सर ब्रीदिंग प्रॉब्लम जी सर बोलो जी सर ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी सर पल्मोनरी की वजह से है तो पल्मोनरी के लिए अभी दवाई क्या चल रही है आपकी कौन सी दवा थी नहीं एक और मेडिसिन डॉक्टर ने दिया था इकोस्प्रिन इकोस्प्रिन का कोई रोल नहीं है हाइपरटेंशन में पल्मोनरी हाइपरटेंशन में मेन रोल आपका आएगा टेडाराफिल 40 mg लेना होगा यस सर वो उतना ही 40 mg नाइट में और उसके साथ आप या तो एम्ब्रिसेंटान ले सकते हैं या बोसेंटान ले सकते हैं एम्ब्रिसेंटान का ज्यादा अच्छा डेटा है टेडालाफिल के साथ तो अगर आप टेडालाफिल 40 लेते हैं तो एम्ब्रिसेंटान भी 10 mg तक शुरू करें और आपका एंटी प्रो बीएनपी करके एक ब्लड टेस्ट होता है जरा सिंपल ब्लड टेस्ट है एंटी प्रो बीएनपी इसको मॉनिटर करते रहिए हाँ एंटी प्रो बीएनपी जो है ये 210 के नीचे रहे या जितना भी कम रहे उतना अच्छा रहेगा बिकॉज ये याद रखो कई बार इकोकार्डियोग्राफी जो हम कराते हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन के लिए ये उतना एक्यूरेट होता है और इकोकार्डियोग्राफी हम इसको अंडर एस्टिमेट कर सकते हैं यानी कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन है लेकिन हमें नहीं दिखेगा या कई बार नहीं होता ज्यादा दिखता है क्योंकि और चीजें भी हार्ट में कई बार इन्वॉल्व होती हैं स्क्लेरोडर्मा में उसके वजह से भी ये प्रेशर बढ़ सकता है और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से बढ़ सकता है तो एंटी प्रोबीएनपी भी एक बड़ा सेंसिटिव टेस्ट है हालांकि स्पेसिफिक नहीं है बट एंटी प्रोबीएनपी भी एक टेस्ट है जो हमें करना चाहिए पल्मोनरी हाइपरटेंशन हमारा वेल कंट्रोल्ड होना जरूरी है टाइटली कंट्रोल होना जरूरी है ओके सर ओके सिंपल आंसर लक्षण ये होता है कि अगर आप अपने रोजमर्रा का काम कर रहे हैं उसमें आपकी सांस नहीं फूल जी सर लेकिन मुझे ठंड में सर ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है जहाँ भी ठंड थोड़ी भी बढ़ती है मुझे ये प्रॉब्लम बढ़ती है तो सांस एम्ब्रिसेंटान ऐड करें 10 mg टेडालाफिल 40 के साथ जिसके साथ आपको रेनॉल्ड्स में भी फायदा मिलेगा इसके बाद भी अगर रेनॉल्ड्स हो रहा है तो फिर जो बेसिक चीजें हैं और जैसे कविता ने दिखाया सर वो मेडिसिन का नाम स्पेल कर सकते हैं या फिर टाइप कर सकते हैं मैं टाइप कर देता हूँ एक सेकंड एम्ब्रिसेंटान के नाम से आता है एम्ब्रिसेंटान 10 mg along with tadalafil या एक सेकंड
Sir, night or day? Night. 10 mg night. Always. Okay. Okay, sir. Sir, any other thing I should take care along with pregnancy or? प्रेगनेंसी में बस ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, पल्मोनरी हाइपरटेंशन शुड बी वेरी वेरी वेल कंट्रोल्ड. That is very important. Okay, sir. And Okay. the medicine Okay. Thanks a lot, for sir. Raynaud's is Nicardia. Okay. Yeah. Okay, sir. Okay. Thank you, sir. Can we use CBD oil for scleroderma? ऑयल का अभी कुछ स्ट्रॉन्ग डेटा नहीं है, because there is so I don't think there's a lot of data in Raynaud's, but are not trying. But अभी उसका clarity नहीं आई. So if you have, you can use and check whether it's working, because that will be information for us. Because अभी इस पे evidence उतना hard नहीं है कि it is working. Okay. Doctor, is there any ointment for ulcers caused due to the Raynaud's to cease the pain? Unfortunately, there is not, but we can do a digital blockade. So what we do is sometimes we can give xylocaine injection to the base of the और उसके साथ जो है nerve और उससे पेन कम हो जाता है. Sorry, sir, I can't hear you. Some background noise is very. He has to unmute everybody. Yeah. So basically, two things you can do. The first thing is that basically what. So I forgot what was the question. I got distracted. Sorry. Any ointment for the ulcers for the Raynaud's? तो नहीं है, but what we can do is we can do a digital blockade. So we can use xylocaine to block, and उससे pain बिल्कुल कम हो जाता है. That is one. Second is can you repeat it? Can you? Digital block sympathetic blockade करते हैं with xylocaine. तो वो base में जो nerves होती हैं उनको block कर देते हैं वो particular finger में. उससे उसमें pain relief हो जाता है और जो ulcer उसको फिर time मिलता है heal करने के लिए. Second is the ulcer will only heal if there is increased blood flow. So you have to give these medications and you have to give intravenous alprostadil. वो भी देना पड़ता है, उससे वो heal करता है. And sometimes even Botox, जैसे मैंने कहा, refractory ulcers में Botox भी जब देते हैं तो वो wound अच्छा heal करता है. पेन के लिए और कोई जेली नहीं लगा सकते हैं आप, but hyperbaric oxygen therapy से भी wound heal करता है. Hyperbaric? And very rarely experiment hyperbaric oxygen therapy. And very rarely nowadays कई बार हम लोग PRP platelet rich plasma के injections करते हैं wound में heal करने के लिए. Plasma injection. इसको कहते हैं platelet rich plasma injection. आपका blood लेके उसमें से plasma निकाल के उसको inject किया जाता है. उसमें growth factors होते हैं जिससे वो heal कर जाता है. Okay. So ये सब के लिए मतलब डॉक्टर कर सकते हैं, मतलब घर पे नहीं होगा? नहीं, घर पे नहीं. घर पे आपको wound के लिए सिर्फ dressing होनी चाहिए और ये जो दवाइयाँ हैं जिससे blood flow बढ़ेगा उसको लेनी चाहिए. Okay. Thank you. सर सॉरी सर, मुझे एक अर्जेंट क्वेश्चन पूछना है आपसे. सर मुझे खांसी ठीक नहीं हो रही है, बहुत मुश्किल से मैं बहुत सारी दवा ले चुकी हूँ, लेकिन मेरी खांसी जल्दी ठीक नहीं हो रही. खांसी स्क्लेरोडर्मा में कई वजहों से होती है. कई बार सिंपल ड्राइनेस माउथ में हो सकता है, उससे खांसी हो सकती है. कई बार इंटरस्टिशियल लंग डिजीज होता है, ILD है मुझे सर. कांस्टेंट सोर्स. जी सर. हाँ, तो उसमें कई बार होती है, उसको फिर हमें सप्रेस करना पड़ता है. पहले हम कफ सप्रेसेंट्स यूज करते थे, बट अब गवर्नमेंट ने बहुत सी कफ सप्रेसेंट्स बैन कर दी क्योंकि स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स कम हैं और ज्यादातर ड्रग अब्यूजर बहुत ज्यादा हैं. तो उस वजह से ये कफ सिरप्स को लोग अब्यूज करते थे और इसको नशे की तरह इस्तेमाल करते थे. कोडीन सिरप आता था, बहुत अच्छा था कफ सप्रेशन के लिए, बट गवर्नमेंट ने उसको बैन कर रखा है. बट अंडर स्पेशल प्रोविजन कई बार उसको हम मंगवा सकते हैं. और रैपिटस वगैरह जैसे सिरप्स होते हैं, एलेक्स कफ लॉजेंजेस आते हैं कफ को सप्रेस करने के लिए. सो दीज आर सम ऑफ द वेज यू कैन सप्रेस द कफ. सर बट हाँ, कफ कई बार की वजह से, जो लंग में फाइब्रोसिस की वजह से है, वो कॉन्स्टेंटली इरिटेट करता रहता है और कई बार कुछ भी हम कर ले वो नहीं जाता है. सर महीनों से मुझे खांसी है और मैंने सिरप लिया है, एजिथ्रोमाइसिन अभी डॉक्टर ने मुझे दिया है, एजिथ्रल.
नहीं, एजिथ्रोमाइसिन काम नहीं करेगा क्योंकि ये इन्फेक्शन वाला कफ नहीं होता है। जी सर। ये इरिटेशन हो रही है जी जो सर, lungs के रात अंदर में बहुत पानी बढ़ जाता है और कफ भी नहीं निकल रहा है सर, अब ड्राई हो चुका है। और दूसरी चीजें इसमें कफ की और भी वजह होती है, और वो होता है कि कई बार रिफ्लक्स होता है। तो स्क्लेरोडर्मा में क्या होता है, जो खाने की नली होती है वो भी सिकुड़ जाती है। जी सर। उसके वजह से जो एसिड है वो रिफ्लेक्स करके हमारे लंग्स में जाता है जब हम सो जाते हैं। जी। उस रिफ्लेक्स की वजह से खांसी होना, गला बैठना और लंग्स में फाइब्रोसिस होता है। तो ये बहुत जरूरी है कि स्क्लेरोडर्मा के पेशेंट्स को एक तो फ्रीक्वेंट थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पीना है, रात को जब सोते हैं तो जो सरहाना है उसको थोड़ा हाइट पे रखना है। जी सर। और हमेशा एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर यानी एंटी वाली दवाई लेनी चाहिए हमेशा, क्योंकि बड़ी माइक्रो मात्रा में ये एसिड जो है हमारे यहाँ से जाके लंग्स में जाता रहता है, हमें पता भी नहीं। तो ये बहुत जरूरी है। और अब ये जो माइक्रो एसिड है ये जाके लंग्स में लंग फाइब्रोसिस करता है, ये अब स्टडी में दिखा है। कई बार इससे भी कफ होता है, तो अगर कफ की सब चीजों को अलग अलग हमें मल्टीपल अप्रोच से इसको करना पड़ेगा, तब जाके कंट्रोल। और कुछ एक N-acetylcysteine यानी म्यूसिनेक्स की टैबलेट्स आती है, ये भी सर बड़ी आप, अच्छी टैबलेट्स होती जी सर, सर आप उसके वॉइस आ रहा है, बैक नॉइज आ रहा है सर। है। सर आप म्यूसिनेक एक मेडिसिन प्लीज टैबलेट टाइप कर देंगे सर, मैं बहुत कब से परेशान हूँ, खांसी बिल्कुल नहीं जा रही है। पर डे ये भी ले सकते हैं। इसको आधे ग्लास पानी में घोल के लेना होता है। जी सर। ये भी कर सकते हैं। और स्पेशल केस में बात करके कोडीन लिंक्टस सिरप मिलता है तो उस ओके सर। ओके सर, ये कब सिरप है? हाँ कब से ये हर जगह नहीं मिलेगा, ये थोड़ा शेड्यूल ड्रग। ओके सर। ओके सर, तो सर ये दोनों मेडिसिन एक साथ लेना है या कोई एक भी लिया तो चलेगा? पहले आप म्यूसिनेक्स से शुरू कीजिए, म्यूसिनेक्स से कम ओके सर। ओके ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। Just now you told the proton pump inhibitor. What is that use? Proton couldn't inhibitors like clofazimide or pantoside, these are called as proton pump inhibitors, and so this is a must drug that you must take. I would like to say एक बार सब लॉग इन हो जाए। मैं before I think we sign off, दो तीन और इम्पोर्टेंट चीजें मैं बताना चाहूंगा अबाउट दी स्क्लेरोडर्मा में जो आर्टरीज होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। एक वो होते हैं जो फिंगर के टिप पे होते हैं, यहाँ पर ये ब्लड फ्लो की कमी की वजह से होते हैं। दूसरे अल्सर्स होते हैं यहाँ पर जहां पर बोनी एरिया है, ये स्किन पतला होने के कारण वहां फट जाता है, इसको प्रेशर अल्सर कहते हैं। ये दोनों का ट्रीटमेंट बहुत बहुत अलग होता है, दोनों एक तरीके से ट्रीट नहीं किए जाते हैं। तो जो फिंगर्स में ब्लड फ्लो बढ़ाने की दवाइयां उनसे ये वाले अल्सर्स हील करते हैं, लेकिन जो अल्सर्स यहाँ हो जाते हैं या एल्बो में हो जाते हैं वो प्रेशर अल्सर्स होते हैं, वो स्किन के फटने की वजह से होते हैं, वो अलग तरीके से इम्प्रूव करते हैं। उसमें ड्रेसिंग होती है, उसमें कुछ इंजेक्शंस करने पड़ते हैं, उससे इम्प्रूव करता है। तो याद रखिएगा ये दो चीजें। और स्टीरॉयड का कोई रोल नहीं है स्क्लेरोडर्मा में। अगर अनलेस लंग की प्रॉब्लम है तो भी हम 10 या 20 mg से ज्यादा स्टीरॉयड नहीं देते हैं। अगर किसी को मसल वीकनेस होती है या हार्ट के आसपास पानी जम जाता है तभी हाई डोज स्टीरॉयड दिया जाता है। अदरवाइज स्क्लेरोडर्मा में पर से स्टीरॉयड्स का ज्यादा रोल नहीं है, सिर्फ 5-10 mg तक स्टीरॉयड दिया जाता है स्किन के लिए और लंग्स के लिए, 10 के ऊपर नहीं दिया जाता। और रेनॉल्ड्स में स्टीरॉयड्स का कोई रोल नहीं है। अगर किसी की उंगलियां नीली या काली पड़ गई हैं, स्टीरॉयड से इंप्रूव नहीं करेगा, वहां पे हमें वेसोडायलेटर्स देना पड़ेगा। तो आई थिंक सर एक और क्वेश्चन था हरबंस जी का। हरबंस जी आप क्वेश्चन पूछिए। हाँ पूछिए। हाँ जी सर। हरबंस जी। हेलो मैम। हाँ जी अंकिता। मैम आई नीड टू आस्क कि कितना प्रेशर अंडर कंट्रोल होता है पीएच का? पहले मेरी मदर का पीएच था, मतलब उनका 70
था प्रेशर, फिर बीच में 55 था, नाउ इट्स 40. 40 इज डिसेंट. साथ में एंटी प्रोबीएनपी करें. एंटी प्रोबीएनपी इंपॉर्टेंट है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है, क्योंकि देखिए पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर एक्चुअली राइट हार्ट में कैथेटर डाल के प्रेशर मेजर किया जाता है. दैट इज द ओनली वे ऑफ मेजरिंग, जो कि इंडिया में कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं करता है. तो इकोकार्डियोग्राफी कई बार हमें ज्यादा भी दिखा सकती है, जरूरत जितना होता है उससे ज्यादा दिखा सकती है, जितना है उससे कम दिखा सकती है. तो वो एब्सोल्यूट मार्कर नहीं है. उसके साथ एंटी प्रोबीएनपी करें. अगर एंटी प्रोबीएनपी भी आपका 210 के आसपास या उससे नीचे है, इसका मतलब आपका टाइटली कंट्रोल्ड है. बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, इनकी ओवरऑल एक्सरसाइज कैपेसिटी, यानी अगर ये अपना नॉर्मल काम करने से भी कम, जो नॉर्मल रोजमर्रा का काम है उससे कम काम में थक जाती है, इसका मतलब प्रेशर कंट्रोल नहीं है. जिनका बैठे बैठे सांस फूल जाना सिर्फ पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, अगर आईएलडी नहीं है तो, और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से थोड़ा नॉर्मल काम से कम काम में भी सांस फूल जाना, ये दो सिम्टम्स का मतलब उनका जो क्लासिफिकेशन हम कहते हैं न्यूयॉर्क हार्ट क्लासिफिकेशन 3 या 4 में है, वो अच्छी बात नहीं, उसको हमें 2 पे लाना है. दूसरा चीज है 6 मिनट वॉक टेस्ट. 6 मिनट में वॉक करना होता है और सैचुरेशन मेजर करते हैं. उसमें अगर वो 400 मीटर चल पा रही हैं बिना सैचुरेशन ड्रॉप किए 90 के नीचे, इसका मतलब वो ठीक है, या 400 के जितना भी पास जा सक रहे हैं उतना अच्छा है. ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं. बट सिर्फ इको अपने में कई बार नहीं दिखाता है, तो इको के साथ एक एंटी प्रोबीएनपी भी होना चाहिए और साथ में 6 मिनट वॉक टेस्ट भी होना चाहिए. और उनकी डेली कैपेसिटी आपको देखना चाहिए कि पहले अगर वो बोलती है पहले मैं जरा उठ के जाती थी बाथरूम तक सांस फूल जाता था, लेकिन अब मैं नहा के आ जाती हूँ सांस नहीं फूलता है, दैट इज गुड. Yes, sir, she is improving. गुड. एंड एक चीज याद रखिए, पल्मोनरी हाइपरटेंशन में डिले नहीं होना चाहिए. इट शुड बी ट्रीटेड वेरी एग्रेसिवली. टेडालाफिल सीधा 40 20 फिर 40, एम्ब्रिसेंटान 10, इस तरीके से ट्रीट किया जाना चाहिए. उसके बाद इंप्रूवमेंट नहीं है तो ऑक्सीजन दिया जाना चाहिए. बट एट ऑक्सीजन यहाँ Sir, she is taking TEDAC 20 mg and Mesitin 10 mg. Increase TEDAC to 40 mg without thinking twice, because TEDAC will work only at 40 mg, not at 20. You increase it to 40 because, as I said, maximum tolerated dose, because pulmonary hypertension is irreversible. जो डैमेज हो जाएगा वो रिवर्स नहीं होगा. तो स्क्लेरोडर्मा में वी डोंट वेट फॉर डैमेज, चाहे वो लंग हो चाहे वो हार्ट हो. हम वेट नहीं करेंगे हाँ थोड़ा सा और खराब हो जाएगा तो फिर देंगे, नहीं. वी हैव टू गिव एवरीथिंग एट द फर्स्ट गो. गिव टेडाक टू 40. 20 ले रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है, 40 से कुछ नहीं होगा, और 40 डोज है. टेडालाफिल 40, एम्ब्रिसेंटान 10, इसमें रखिए और बेटर होता है. So Mesitin, she is taking Mesitin, not Ambrisentan. 10 and Tadalafil 40 in that. Sir, TEDAC twice a day, 2020. No. पिछली बार अभी किसी ने थोड़ी देर पहले पूछा था कि पल्मोप्रेस टेडालाफिल, इट इज टू बी टेकन वंस अ डे. उसकी हाफ लाइफ लंबी होती है, उसको दिन में 2 बार नहीं लिया जाता है. 20 से आपने 40 करना है रात को, कोई प्रॉब्लम नहीं होती. Okay, sir. Thank you, sir. सर मैं यहाँ पर थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी. मेरा लास्ट ईयर थोड़ा सा ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम थी, तो मैंने काफी टेस्ट भी कराए थे, पीएफटी वगैरह भी कराया, डॉक्टर ने 6 मिनट वॉक टेस्ट भी कराया मेरे पल्मोनोलॉजिस्ट ने, लेकिन मेरा सैचुरेशन जो है वो ड्रॉप नहीं हो रहा था, वो बेटर था. तो उन्होंने ये मुझे बताया कि आपकी बाकी कंडीशन सही हैं, तो आपका हो सकता है कि स्टेमिना कम हो. आप अगर अपना स्टेमिना बढ़ाइए वॉक करके, तो आपको हो सकता है ब्रेथलेसनेस कम हो जाए. और मैंने स्टार्ट किया अपने वॉक करने से, और उन्होंने कहा मॉर्निंग में मत करिए विंटर्स में, आप इसको अर्ली मतलब अराउंड 10 to 11 o'clock पे करिए. तो मैंने वो वॉक स्टार्ट करी और मेरा काफी इम्प्रूवमेंट हुआ. मेरा दिस ईयर मेरा इतना ज्यादा इम्प्रूवमेंट है कि मुझे जो आपने मेडिसिन लिखी थी वो भी अब नहीं लेनी पड़ती हैं. तो ये चीजें भी ये मैं शेयर करना चाहूंगी कि स्टेमिना भी इम्पोर्टेंट होता है. यस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है. एक्सरसाइज कैपेसिटी एक्सरसाइज और लंग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, वॉकिंग, ये अपनी कैपेसिटी बढ़ाना बहुत जरूरी चीज है. वेरी नाइस.
कविता आप दिखा दो, आपका फुल स्क्रीन है, व्हाई डोंट यू शो दैट अगेन, वो ग्लव्स दिखा दीजिए अगर। हाँ सर, ये ग्लव्स में एक चीज इम्पोर्टेंट ये है कि लोगों को मोबाइल यूज करने में प्रॉब्लम होती है ग्लव्स पहन के। इसमें यहाँ पर एक पॉइंट दिया हुआ है दोनों इंडेक्स फिंगर्स में, उसमें यहाँ पर वो है जिससे कि आप टच स्क्रीन फोन यूज कर सकते हैं। ये मुझे बहुत यूजफुल हुआ है, नहीं तो मुझे फिंगर्स निकाल करके ग्लव्स तब यूज करना पड़ता था। मुझे लगता है ये ग्रुप में पोस्ट कर दो, नीतू इसको ना, इसको फोटोग्राफ लेके कविता भेज देगी, इनको ग्रुप में पोस्ट करो, लॉट ऑफ पीपल विल बेनिफिट फ्रॉम दिस। यस एक्चुअली क्रिप्स के लिए भी वो बना हुआ है जी, ये क्रिप्स के लिए भी है। यहाँ पर थोड़ा सा रबर का भी पॉइंट है, तो आपका स्लिप भी नहीं होगा कुछ जो आप पकड़े हुए हैं। और यहाँ पर वो उसको यूज करने के लिए मोबाइल फोन का भी है, और इसमें काफी वार्म रहता है और थोड़ा सा टाइटनेस भी रहती है, ताकि आपको जो मतलब थोड़ा सा ब्लड फ्लो भी ऊपर की तरफ जाता है। तो ये मुझे डिकैथलॉन से मिले थे, तो ये मैं यूज करती हूँ और मुझे बहुत फायदा है इनसे। मैं इसका फोटोग्राफ भेज दूंगी। दोनों का, इसका भी और जिसके ऊपर जो पहनते हैं, वो बहुत ही अच्छी चीज है। In fact, Decathlon is the only brand which we discuss in the group. वहीं से in fact I bought thick socks and they are very useful actually. I've been using it past 1 or 2 years and very nice in fact. As sir rightly said, Decathlon products which mountaineers specially use. They are very useful for all our Raynaud's patients. Right. Okay. So in fact, Anand has sent the link also. So people who are there, or in fact, otherwise I'll send it in the WhatsApp group also. Thank you, Kavita. So anybody else who has the question? So I guess most of the people have already left. Jitendra, you have a question? Yes, the link actually got. Hanji, ma'am. Disconnected. मैम आपका जो लिंक है अभी भी बहुत वीक है। मैम आपकी आवाज अभी भी क्लियर नहीं आ रही है। हाँ। I think they have a network. Regarding sir, that we were not able to hear. Is that Divya? Hello? 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 मैम बोलिए, अब आपकी आवाज ठीक आ रही है, बताइए। वो एक्चुअली सर ने प्रोटीन यूरिया का बताया ना, वो वी वर नॉट एबल टू हियर बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम। ओके, कह रहा था कि प्रोटीन यूरिया आमतौर पर स्क्लेरोडर्मा में उतना ज्यादा नहीं होता है। कितना प्रोटीन यूरिया उनका हो रहा है, 24 आवर प्रोटीन कितना है, ये जानना जरूरी है। अगर एक 1.5 ग्राम के आसपास या उससे नीचे है तो वो उतना सीवियर नहीं है, लेकिन अगर 2 या 2 ग्राम के ऊपर है तो उसके कारण हो सकते हैं किडनी के अंदर, उसके लिए बायोप्सी की जरूरत पड़ती है, या रीनल आर्टरीज में जो ब्लड फ्लो होती है उसके लिए डॉपलर वगैरह देखना जरूरी है। तो उसको इवैल्यूएट करना बहुत जरूरी है कि प्रोटीन यूरिया का कारण क्या है, और फिर उसको अकॉर्डिंग करना है। सिर्फ एनवास देने से नहीं होगा, एनवास एक नॉन स्पेसिफिक ड्रग है प्रोटीन यूरिया के लिए, लेकिन प्रोटीन यूरिया का कारण हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्रोटीन यूरिया पर से स्क्लेरोडर्मा में नहीं होता है। अगर स्क्लेरोडर्मा में रीनल क्राइसिस हो तो होता है, अगर रीनल आर्टरी में नैरोइंग हो जाए या ब्लॉकेज आ जाए तो होता है, और बहुत रेयरली अगर किडनी इन्वॉल्वमेंट हो तो होता है। तो ये सब चीजें नेफ्रोलॉजिस्ट को दिखा के उसकी सारी जांच होनी चाहिए, पहले कारण फिर इलाज होना चाहिए। हाँ, ये बहुत ओके सर, थैंक यू। ओके, सो दिव्या अनम्यूटेड हरसेल्फ। दिव्या आपका कोई क्वेश्चन है? हेलो, मैं अनीता हूँ, सॉरी मैम। ओके ओके अनीता जी, बताइए। हाँ सर, मेरे पिछले 5 साल से स्क्लेरोडर्मा है और मेरे दोनों हाथ टाइट हैं, और अभी पिछले 1 साल से क्या हुआ, मेरे जो हाथों में अपने आप ऐसे स्किन ब्रेक होके ऐसे हो जा रहा है दोनों हाथों में, तो क्या करूं? ये ब्लैक जो हो रहा है, ये फिंगर टिप्स पे हो रहा है या कहाँ पे हो रहा है? टिप्स पे भी हो रहा है, दोनों हाथ में भी हो रहा है।
नहीं, हाथ में तो मतलब कोहनी के नीचे भी ब्रेक, हाँ, तो अपने कोहनी आप के स्किन ब्रेक होके मतलब दोनों हाथों में बहुत सारी जगह, एक जगह भी नहीं, अपने आप तो कम हो जाता है फिर फट जाता है। ये जो ब्रेक हो रहा है ना, ये स्क्लेरोडर्मा में स्किन पतला होने की वजह से हो रहा है। तो अच्छा इसका ट्रीटमेंट अलग होगा। हाँ, ये हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि जो उंगलियां हैं वो तो रेनॉल्ड्स हैं, वो तो उसके लिए तो जो उंगली की टिप्स पे नीली पड़ती हैं उसके लिए तो हमने सारा डिस्कस कर लिया, दवाइयां वगैरह। हाँ वो लेकिन जो कोहनी में होना या जो हड्डी वाले एरिया में वहां पे जब स्किन फटता है वो अलग हाँ चीज होती है। स्किन पतला होने की वजह से फटता है, उसे देख के उसे हमें और हमारे प्लास्टिक सर्जन को मिलके उसे करना पड़ता है। उसमें कुछ इंजेक्शंस करने पड़ते हैं, हाइपरबारिक ऑक्सीजन करना पड़ता है, वो सब मिलके वो हील करता है। ओके ओके, थैंक यू। So guys, anybody else with any question? तो सर चैट में भी कोई क्वेश्चन नहीं आया है। So sir, any parting thoughts, any parting comments you want to give? विंटर्स हैं एंड वी हैव टू बी केयरफुल फ्रॉम नाउ इटसेल्फ। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बार का विंटर थोड़ा ज्यादा हार्श होगा, तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। ओके, टिल मार्च, प्लस अब ये कोरोना का भी है तो ये डबल चक्कर चल रहा है। तो होपफुली कोरोना के लिए तो वैक्सीन आ जाएगा, बट ये है कि जरा से भी कुछ हो रहा है तो आपके जो भी पास में रूमेटोलॉजिस्ट हैं उनसे मिलके पहले से ही थोड़ा, हमेशा विंटर से पहले एक बार उनसे मुलाकात कर लीजिए, ताकि वो अकॉर्डिंगली जो है आपको मेडिसिन एस्केलेट या जो भी करना है। right sir, that was a very wonderful advice. In fact हमारे काफी सारे ग्रुप मेंबर्स को तो अभी से प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है अल्सर्स की। So that was a very wonderful session. Sorry sir. Thank you. So I think then the therapy has to be escalated, जिनका भी हो रहा है ना अल्सर्स, तो फिर उनको एग्रेसिवली एस्केलेट कर, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही मैं कहता हूँ मैक्सिमम टॉलरेटेड डोज तक जाइए, मिनिमम टॉलरेटेड डोज तक मत जाइए, स्पेशली विंटर। Right sir. Thank you so much sir for today's session. Thank you for giving this time to us. Thank you all of you from my side. Thank you and all the best and bye. Thank you sir. Bye bye. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you.